One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. दर्द है भाई, दर्द है. तो बॉस के सामने कुछ चीजें नहीं करनी है.
Keep it safe. भाई पील दिया भाई हमने, बॉस को मानना ही पड़ा भाई। It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake. You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. ये नहीं मारेगा। There's only room for one boss and one snake. एक मिनट रुकना भाई। भाई गई भाई। Boss GG's. भाई W भाई।
Ready to go, Snake? Are you okay? Snake? Yeah. I told you you could trust me. अरे भाई ये ना माने Ocelot! We're not done yet. Too heavy! भाई लड़ाई हो रही है बहुत। Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good! लड़ाई हो I रही है picked up a भयंकर। few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! What do you say to one last showdown? Yeah, all right.
And What's your name? Snake. No. Not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. जैक था इसका तो. Plain name. But I won't forget it. Come on! It's a blank. Oh, that was fun. Till we meet again, John. ये क्या पकलूली थी. We made it. Yeah, we sure did. Oh no, Miggs! There's no way out. What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were great, Eva. Huh? Thanks.
Understood. Aborting mission. RTB. Look! The Bigs are turning back! Woo! W भाई Well done, Snake. Most likely under orders from Krishna. Is this his way of help? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just want. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think it should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to go To meet me? The DCI and the president himself. Don't keep them waiting. and जी president So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too? Or 1 मिनट भाइयों रुको scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, snake.
wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgin was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The 2 NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgin, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy, too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I, too, am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgin couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. भाई चूतिया काट के चली गई तो अपना Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She
She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. W हो गया भाई ये तो. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. वाह. You are a true patriot. You know, we could use an infiltration unit like Fox in the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss. And that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive. And she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. Bye. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given. And she had no choice but to carry it out. Oh bye. Her death Crazy हो गया भाई ये तो. was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory.
as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. भाई साहब डब्ल्यू हो गया भाई ये तो कुत्तों में वही लड़ाई भैया भयंकर वाली The sons of Big Boss are born. मतलब एंड में कुछ नहीं मिला बस लौंडे ही लगे भाई अपने लौंडे You've got a way to fall. Yes, Grozny Grad and the Granin Research Facility have both been wiped out without a trace. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too.
Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I am always at the CIA's disposal, Mr. Director. भाई वो लौंडा जो था वो एडम था. Oh my god, bro. Saves continues alert phase. Human killed 318. Total damage taken 26. Life medicine used one time. Meals eaten. Special items used none. Your title is Crocodile. तो यही था भाइयों. हमने 12 घंटे 24 मिनट में हमने ये ख़त्म कर दिया अपना गेम. ठीक है, मैं अभी आया 1 सेकंड. ओ भाई डब्ल्यू हो गया. सुन, बोल बोल बोल, क्या हुआ भाई साहब? क्या गेम था, दिमाग का भोसड़ा कर दिया भाई. पर गेम की स्टोरी भाई, ओ माय गॉड. ट्विस्ट पे ट्विस्ट पे ट्विस्ट पे ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते रहे बे. बकचोदी. अब मजा आया, कुछ भी बोलो. या फिर अभी नहीं, अभी और काम है थोड़ा. बाजार जाना है अभी स्ट्रीम बंद करके. भाई साहब कॉल कर दूंगा मैं तेरे को. तो भाइयों यहाँ पे ये गेम ख़त्म हो चुका है. इस गेम में कुछ नहीं, बकचोदी थी बस. हमको एक CIA अमेरिका ने एक मिशन पे भेजा था रसिया में कि वो कुछ ऐसा बना रहे हैं जो कि अमेरिका की बैंड बजा सकता है, इसलिए हमको भेजा था वो मिशन पे. और वो साइंटिस्ट को हमको लेके आना था ताकि वो बनाना पाए. पर वो साइंटिस्ट को बाहर कैप्चर करके ले गए और उसमें पहला ट्विस्ट आता है कि उसको कैप्चर करने में मदद करी हमारी खुद की एजेंट ने, एक्स एजेंट ने, जिसका नाम था बॉस, जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को ट्रेन करा था, स्नेक को. इनकी यूनिट थी कोबरा यूनिट.
तो उसमें वो बॉस थी और ये स्नेक जो था वो इसका ये मान लो एक तरीके से वारिश टाइप था, उसने सब कुछ सिखाया था इसको। तो वहाँ पे उस वो मदद करती है रशिया की, और भाई धोखेबाजी हो जाती है वहाँ पे, और बॉस जो है पेल लेती है स्नेक को। तो वहाँ से वो सब आ जाता है और वो लेके भग जाते हैं साइंटिस्ट को, और उसके बाद फिर हमारा मिशन होता है कि दोबारा साइंटिस्ट को रिट्रीव करना और बॉस को पेलना। तो फिर हम दोबारा जाते हैं बॉस को पेलने में, हमारी मदद करती है एवा नाम की लड़की, और उधर एक ओसलेट करके लौंडा होता है वो भी। तो वहाँ पे हमारी होती है लड़ाई, प्योर होता है, प्योर भी प्योर टू प्योर चलती रहती है फाइट्स, ठीक है। तो उसके बाद फिर यही होता है कि हमको साइंटिस्ट को बचाने जाना होता है। उसी दौरान हम कोबरा के जो बाकी के जो बॉस के संग मिले हुए थे उनको निपटा देते हैं। हम साइंटिस्ट के पास पहुंचते हैं तो पता चलती है साइंटिस्ट भाई ने पूरा काम कर दिया, उसको पूरा तैयार कर दिया है। अब बस ये है वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो उसको हमें डिस्ट्रॉय करना था और बॉस को मारना था, ये मिशन था। और साइंटिस्ट को बचाना था, पर साइंटिस्ट को वो पेल देता है और हमको पकड़ लेता है। जो उनका वो होता है मेजर कर्नल जो भी था, वो हमको पेलने के बाद भाई बहुत पेलता है। वहाँ पे हम साइंटिस्ट को तो निपटा ही देता है। उसके बाद जो है बॉस जो है हमको बहुत सूतती है, मतलब इतना सूता है ना बॉस ने, तो मतलब इतना सूता है कोई सूत नहीं सकता। पर एट द एंड जो एवा लड़की है वो भी पकड़ी जाती है कि ये भी स्पाई थी, उसको भी मारते हैं, पर हम बॉम्ब प्लांट कर देते हैं और वहाँ से जाते हैं। लेकिन वो बॉम्ब प्लांट करने का रद्दी भर का फ़ायदा नहीं हुआ, प्योर में हमने उसको मारा, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब वो जो पूरा एकदम सांड सा लेके हमारे पीछे पड़ जाता है वो लौंडा मेजर कर्नल जो भी था। इस दौरान हमको वो उसका एक और उसके संग होता है एजेंट, वो हमको मदद करता है, मतलब हमारा दुश्मन होता है वो, पर वो हमें मदद करता है। तो एवा के संग भाग रहे होते हैं और बॉस तो भाग गई होती है। तो इस दौरान पता चलता है बॉस जो है मदद कर रही है। तो वहाँ से हम उसको मार देते हैं, रोबोट को भी मार देते हैं। वो मिशन सक्सेसफुल होएगा, हमने उस दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बात आती है बॉस को मारने की, तो हम मिलते हैं बॉस से। तो बॉस जो है वो जाते हैं, बॉस से प्योर होता है, तो बॉस हमको बताती है कि वो हमारे हाथों से मरना चाहती है। यहाँ से एक ही बॉस निकलेगा और वो तुम होंगे या वो, ऐसे पता चलेगा। और वो कहती है मेरे लिए अब यहाँ पे कुछ रहा नहीं, मेरा हो गया है। हम फिर मार देते हैं बॉस को, भाई तुम्हें पता ही है प्योर में तुम्हारा भाई जॉर्ड है ही। उसके बाद प्योर में जीत के फिर हम एस्केप कर रहे होते हैं, वो फिर आ जाता है एजेंट जो भी था। वो फिर कुछ करता नहीं, मस्ती वस्ती करके चला जाता है। तो हम एवा के संग निकलते हैं, थोड़ा चिल करते हैं, नाइट चिलिंग्स होती है थोड़ी सी। फिर उसके बाद पता चलता है वो भी भग जाती है, और ये पता चलता है वो थी चाइना की तरफ से एजेंट जिसने सबको चूतिया काट दिया, लड़के का भी, वो क्या कहते हैं अमेरिका का भी, और चाइना रशिया का भी। तो वो चाइना से होती है और वो कहती है कि मैं सब कुछ लेके जा रही हूँ, जो भी तुम वहाँ से लेके आए इन्फॉर्मेशन मैं चोरी करके लेके जा रही हूँ, और ये फलाना। फिर वो लास्ट में एक स्टोरी बताती है और स्नेक भाई को हमारे को सब मेडल वेडल मिल जाते हैं। और लास्ट में हमको एक स्टोरी बताती है वो कि भाई साहब ऐसा है कि जो बॉस थी वो थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन क्या हुआ कि जब वो लोग जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि ये क्या बोलते हैं जो उसने वो जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा और डीप जाने के लिए उसने ये सी चीज़ें करी। और मतलब ये सब प्लान्ड था, और अमेरिका ने उसको ऑर्डर दिया था कि तुम जो है तुम मर जाओ, अपने आप को मार लो। मतलब सारा ब्लेम ना उन पे डाल दिया उन्होंने, बॉस पे, कि बॉस ने ट्रेड व्रेड करा, मतलब पूल क्रिमिनल बना दिया उसको। यहाँ पे अमेरिका ने खेल दिया चांस, ऐसा दिखाया भाई वो, मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसा इस गेम में दिखाया है। तो अमेरिका का वो हो गया सीन, अब उसको पूरा विलेन विलेन बना दिया और ये चीज़ थी। तो पर वो ये सब अमेरिका के लिए करा उसने, और वो यही था कि अमेरिका ने बोला था कि तुम जो है इसकी स्नेक के हाथों मरोगी, और ये सब मतलब प्लान्ड था। तो ये सब हो गया, ठीक है। इसके बाद भाई ट्विस्ट तो अगला आया, वो जो लौंडा नहीं था जो उसके संग था मेजर कर्नल के संग, भाई वो ही था एडम, भाई वो भी एजेंट था। और उसने ही हेर फेर क्या कर दिया ना, जो वो
क्या थी, जो डेटा था जितना भी वो सब फेक डेटा उस लड़की ले गई वो, क्योंकि असली डेटा तो उसी के पास था। जब वहाँ वो लड़ने गया था तब उसने वहाँ से सब ले लिया था और फेक डेटा रिप्लेस कर दिया। भाई साहब, ओ माय गॉड, क्या था भाई ये। और ऐसे करके गेम ख़त्म। और यही हो गया कि जो बॉस थी जिसने सब कुछ अपना देश के लिए निकाल दिया, उसको आखिरी में क्रिमिनल बना दिया उन्होंने। पर ये जानता था असलियत, इसको जाननी थी। वो चाहती थी कि ये जाने, ये ना समझे कि वो क्रिमिनल है। तो ऐसे करके इसको पता चला, तो ये तो सल्यूट ठोक रहा है, बाकी गांड मराए। और हम तो भाई के इमोशनल अब होते नहीं है, क्योंकि भाई देखो इट्स जस्ट फ्रिक्शन। एक गेम है, कोई भी स्टोरी, कैसी भी स्टोरी, बट स्टोरी कड़क थी भाई को। इतने ट्विस्ट भाई साहब मैं नहीं झेल पा, बहुत ट्विस्ट थे भाई, बहुत ज्यादा। तो यार गेम अच्छा था, स्टोरी बहुत अच्छी थी, स्टोरी तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं। बाकी पूरे गेम को 8.5 रेटिंग्स, जस्ट बिकॉज सम एस्पेक्ट्स जो हैं वो अननेसेसरीज डाले हुए हैं बहुत ही ज़्यादा। एक दो फाइटों का कोई पॉइंट नहीं था, बट वो फाइट थी। तो या एक वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी, बट 8.5 रेटिंग भाइयों ज़रूर खेलो ये गेम को, मस्ट प्ले गेम है। अगर आप को थोड़ा सा शूटिंग्स गेम्स, टैक्टिकल्स गेम्स पसंद है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको खेलने में, बहुत आसानी से खेल लोगे। मैंने भी 12.25 घंटे मैंने जानबूझ के टाइम लगाया है, वरना ये 8 घंटे का था मुश्किल। 4 घंटे तो मैं खींचे हैं बस, कि मैं चिल चिल करके खेल रहा था बहुत ज़्यादा ये गेम को, क्योंकि बहुत काफ़ी वो सेनुआ सागा हेल ब्लेड में भाई बहुत स्पीड रन करा था मैंने। वो गेम था 8-8 घंटे का, 4-4 5-5 6-6 घंटे में कंप्लीट करा था वो। तो मैं बहुत वैसा बस्ट हो गया था मेरा माइंड, तो इसलिए मैं आराम से करा है। तब जाके तो 12 घंटे लगे हैं, 12.5 घंटे। बट गेम बहुत अच्छा है भाइयों, ठीक है, खेल सकते हो आप लोग, बढ़िया गेम है। बाकी तो भाइयों यही है कि गेम कंप्लीट हो गया है फुल। ऑपरेशन स्नेक ईटर कंप्लीट हो चुका है, सब चीज़ें चिल हो गई हैं। बस ये लास्ट वाला ट्विस्ट तो और गजब लगा है मेरे को। अब जो नेक्स्ट गेम है भाइयों, एक है लॉस्ट सोल असाइड करके, तो मैं उसका एक प्यारी गेम प्ले देखूंगा कैसा है क्या है, खेलने लायक है, अपनी नई रिव्यूज चेक करेंगे भाभी, उसके बाद खेलेंगे। बढ़िया बढ़िया गेम्स आ रहे हैं भाइयों, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से चिल है सब। तो या बॉयस, और या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे। अब हम कब है, फ्राइडे है कल, तो सैटरडे को मिलेंगे। आप सैटरडे को विद द न्यू गेम विद द न्यू मूड। तो बाय बाय, ध्यान रखो वही अपना, अपनी फैमिली का, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। सी यू गाइस ऑन सैटरडे। 8:30 का टारगेट है, बस सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट स्ट्रीम में, बाय बाय। बढ़िया था यार गेम, अच्छा था, खेलना ज़रूर। अगर आपका लेने की वो हो और मन करे कोई गेम ना हो तो ज़रूर खेलो, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। थोड़ा ट्रिगरिंग गेम है बट या मज़ा आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। तो या बाय बाय।